अधिक मैथ्स मैंने सर को दिखाया था सामने वाले या फ्रंट बाय हाँ मैं दिखाया लाइक अच्छा इसको मैं चलिए ये हम लोग निकाल क्योंकि ये अपना दिमाग फॉर सम रीजन मैं मानना चाहता हूँ तो ये भी 40 का होगा ये होगा ना last bench second class there's a difference between last bench and I उसे लेकर जाना ना आकांक्षा को सर के पास हाँ सर के पास लेकर जाना था ना आकांक्षा को इसका क्या आकांक्षा को लेकर जाना था ना सर के पास केमिस्ट्री सर के पास अरे कार्ड का क्या हुआ अच्छा इसका पावर से बाहर करते इसका अच्छा ओके ओके ये लाइन से लेकर हिंदी के कौन है तो हमारा केमिस्ट्री मतलब पीरियोडिक टेबल हो गया था हो गया ना और ये सारे इयर्स पे सॉल्व किए थे मैंने आपको दिखाया हां यस इसने पूरा लिखा उसने टुमारो नेक्स्ट टाइम यू विल शो चल तुम्हारा होमवर्क क्या है बस 2014 2005 तक बोला था कैसे चलेगा भाई वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड एंड तुम हार्डली वर्क क्या हो जाएगा हार्डली वर्किंग एंड वर्क तुम्हारा क्या है पूरा 2005 तक हो गया आपका पूरा 2005 तक कंप्लीट कर आज एक हम लोग सरप्राइज टेस्ट लेंगे ये टॉपिक सबको 4 पेजेस निकालना है ठीक है बिना देख के आंसर लिखना आई एम चेकिंग इट और जो नहीं किया उनका घर में फैमिली ये इसमें ग्रुप में अपना मैसेज जाएगा होमवर्क नॉट डन ठीक है चलो तुम्हारा तुमने लिखा दिया तुम्हारा होमवर्क इनकम्प्लीट क्या नाम है तुम्हारा आर्य पूरा पढ़ाई करना है 7 8 इयर्स तक हमको पढ़ाई करना है ठीक है ना फिर उसने कैसे कंप्लीट किया राइट पूरा अच्छी तरह कंप्लीट करना है कारगिल में कंप्लीट कर ठीक है एंड यू आल्सो हैव कंप्लीट चलो बताओ तुम्हारा जो भी होमवर्क किया जब होमवर्क फुल की हाफ कंप्लीट मीन टाइम कंप्लीट करो तुम्हारा क्या होमवर्क यजर greater smaller now homework
सबका होमवर्क बता दो. हमारा previous year's questions 2009, 11, 12, 13 उल्टा गए 2019 तक आए 17, 18, 20, 21. Next. 19, 18, 16, 15, 14 ये क्या है? नहीं लिखा. Next. We'll check it out. Doubt you clear. बताओ. Well, let me check the homework. 17 उल्टा जाना है. सीधे की उल्टा. ऐसा. 10 10 11 16 8 5 नहीं लिखा. 5 दो नहीं किया. आ जाओ. मैडम को नाम दे दो. शीन मैसेज योर पेरेंट्स. होमवर्क लास्ट वर्क नहीं कर. चलो जाके बाहर जाके नाम दे दो. तुम्हारा तीनों जन नाम कर दो. 1 2 3 तुम्हारा और किसने नहीं किए? आ जाओ इधर आओ. होमवर्क तब जाके हम आगे उसका इम्पोर्टेंस मालूम पड़ेगा. ये क्या है माय फ्रेंड? ये किसका है? कंप्लीट नहीं है तुम्हारा. इधर आओ. 2005 2006 कुछ नहीं. नहीं वही डालना भूल गए तो अपना नाम देना अभी याद रखना. चलो आ जाओ. कब 1 2 3 4 चलो. which question you are having doubt ask. डाउट पूछो. क्या है? इधर आओ. 1 2 3 जल्दी जाओ बाहर. अपना नाम दे दो. पेरेंट्स को मैसेज आएगा कि होमवर्क नोट डन. फिर तुम्हारा इनकम्प्लीट है ना. तो बेचारे वो 9 स्टैंडर्ड वाले के पीछे पड़े. चलो यजन ask the doubt. किसका किसका क्या डाउट है पूछो. Sir, now from year 2018. 2018 बोलो. Question 4 second. Question 4 sub question number 2. बोलो क्वेश्चन बोलो. Question is हाँ पूछो. study the सेम क्वेश्चन डाउट. हाँ बोलो. हाँ अच्छा नो. ये लेकिन ये ओवरलैप हो रहे हैं. यही डाउट है तुम्हारे को. चलो बोलो. study the abstract of the periodic table given below and answer the questions that follow. Give the alphabet corresponding to the element in the question. Do not repeat an element. So my question was the ion of which element is migrate towards the cathode during electrolysis. So which ion will go towards the cathode? Definitely A will go towards the cathode. Why? Because it is positive ion. So A ions will go to the cathode because वो cations will go to the cathode. दूसरा which ion? बोल दिए. मैसेज गया है. चलो आ जाओ. B is a metal ion. Yes, the ion which to which the element migrate towards. Which element forms? अच्छा B वाला ना.
The ion of which element will migrate towards the cathode during electrolysis? Definitely H plus ions, because H plus ions are actually what we can say less, more unstable than B, because ऊपर है ना, B क्या है, they will remain stable because उन लोग ion form में रहेंगे, तो B ज्यादा stable है और A plus ion is less stable, इसलिए हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है? कहो ना कार मिलेगी, वो याद है ना तुम्हारे को एक्टिविटी, तो उसमें हाइड्रोजन नीचे आ रहा है ना, इसीलिए. Then which non-metallic ion has a valency 2? Non-metallic ion having a valency 2E, which is an inert gas, F. बस आ गया. चलो दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? Sir, I got from year 2015. 2015. बोलो. Focus. हाँ? 2015. 2015 किधर है? चलो क्वेश्चन नंबर, give a reason, ना? So question 4. क्वेश्चन नंबर 4. 4 किधर है? इसमें है ही नहीं 4. 2016 or 15? So 15 is 15. Question 4 first. अच्छा एक मिनट. 15. हाँ. Question number 4. Question number 4. All of you open that page number 18. Element X is a metal with a valency of 2. Y is a non-metal with a valency of 3. Write the equation to show how Y forms an ion. Yes or no? तो X का valency क्या है? 2. Y का valency क्या है? 3. ये 2 और 3. Yes or no? अपने को क्या मिलेगा? X3 Y2. राइट फॉर्मूला. और इन्होंने क्या पूछा है? 2015 ना. हाँ Question 4 first answer is this. एक मिनट. तो an element 3, then write an equation to show that Y forms an ion, right na? Y forms an ion means what? Y gains 3 electrons and become what? Y3 minus. बराबर. दूसरा, Sir, from if Y is a diatomic gas, write the equation of the direct combination of X and Y form a compound. अगर Y diatomic gas है, ठीक है ना? Y diatomic है, ठीक है? और वो क्या रिएक्ट कर रहा है किससे? X से. डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ X, राइट ना? X का वैलेंसी कितना है? 2 है ना? बराबर. तो इसका वैलेंसी 3 है, तो इधर क्या हो जाएगा? So 3 atoms of X, that means X3, इसको ऐसे ले सकते हैं 3X and 2Y, yes or no? Here it will be what? X3 Y2 direct, because 3 atoms of X चाहिए, और 2 atom of Y, तब जाके X3 Y2 बनेगा. ओके, या फिर ऐसा कर सकते हैं, because diatomic gas है ना 2, तो ऐसा कर सकते हैं, because वो diatomic है. Diatomic means 2 atoms साथ में है, हम लोग ऐसे लिखते हैं. और ये फॉर्मूला है. Got it ना? Next one. Sir, I got from year 2014 question 3. Year 2014 question 3. 2014. Sodium hydroxide. 3. पहले का सोडियम ये देखो ये कौन सा फॉर्मूला आ सकता है? ये वाला जो X है ना, अपन मैग्नीशियम लिख सकते हैं, और ये Y को अपन नाइट्रोजन लिख सकते हैं, राइट ना? अगर मेंशन है कुछ में कभी हाँ, लेकिन अभी मैं आई एम जस्ट कंपेयरिंग कि तुम बोलोगे सर मेरे को थोड़ा सा ये एक, आई मीन इफ आई वांट टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कंपाउंड, तो ये जो मेटल है मैग्नीशियम का मेटल का वैलेंसी कितना है? 2 है ना? 2 वैलेंसी है ना मैग्नीशियम का. और Y2 इज एक्चुअली व्हाट? नाइट्रोजन डायटोमिक गैस है. अपना नाइट्रोजन अगर तुम डालोगे ऐसा, ठीक है, अपने को ये मिलेगा ना, Mg3N2 मिलेगा ना. इसीलिए अपने को ये N2 फॉर्म में लिखने का, यानी ये Y2 फॉर्म में लिखने का, और ये अपना मेटल है तो सिंगल एटम फॉर्म में, बट इसका कोएफिशिएंट 3 आएगा. इधर क्या हो जाएगा? अब जाके X3 Y2 ऐसा चाहिए, तो मैं इधर लिख देता हूँ फिर से, ठीक है ना? और एक हो सकता है कि
एक कैल्शियम हो सकता है, 3 कैल्शियम और 1 नाइट्रोजन। कैल्शियम का वैलेंसी 2 ही है, इसलिए कैल्शियम नाइट्राइड भी हो सकता है। जस्ट आई एम गिविंग दिस काइंड ऑफ एग्जांपल्स दे कैन गिव। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल ये टाइप ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क। नेक्स्ट वन, कौन सा क्वेश्चन और डाउट है? Question 2014 ADE. हाँ 2014। So question 3 ADE. 3 A. So question ADE. ADE. अच्छा, if M is a metal above hydrogen in the activity series and its oxide has a formula M2O, this oxide when dissolved in water to form corresponding hydroxide, which is a good conductor of electricity. The above context, answer the following. What kind of combination exists between M and O? Okay, M and O के बीच में क्या combination होगा? Which is a good conductor of electricity. Okay, so it is a what kind of combination exists between? It is ionic bond, ना? नहीं, because उसका वैलेंसी 1 है और ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, इसलिए वो लूज करेगा अपना इलेक्ट्रॉन. So it is going to be ionic bond. B. How many electrons are there in the outermost shell of M? 1. Name the group to which M belongs. First group. State the reaction taking place at the cathode. कैथोड में मेटल आयन जाएंगे तो मेटल क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, राइट ना? अगर ये M2 और ये Na2 है, ठीक है, तो जो Na+ आयन और ऑक्साइड आयन फॉर्म होंगे ना, तो ये Na+ वहां पे जाएगा और वो अपना लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ जाके गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देन लास्ट वन क्या दिया है? नेम द प्रोडक्ट एट द एनोड। ऑक्सीजन, ऑक्साइड आयन क्या करेंगे? ऑक्साइड आयन अपना जाएंगे, इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम व्हाट? ऑक्सीजन। यहां पे 4, ठीक है। और सोडियम आयन कैथोड की तरफ जाएगा, ऑक्सीजन एनोड की तरफ, बराबर। नेक्स्ट वन क्या है? So I thought from the year 2006. 2006. Question number 1. The elements of one short period of the periodic table are given in the order of from left to right. To which period do these elements belong? It's the second period. Which is the missing element? Where should it be? Lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen. Missing है, और वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आना चाहिए। Third, which element exhibit catenation? Carbon. Place the elements fluorine, beryllium, and nitrogen in the order of increasing electronegativity. Beryllium, nitrogen, and fluorine. Right? Catenation is the direct bonding between the atoms of the same element. Carbon का एक unique capability है. Carbon can form long chain by combining with itself. इसको बोलते हैं catenation. The self-linking property of an element to form long chains, rings, organic chemistry में पढ़ेंगे. It's called as what? Catenation. ठीक है? Next one. और क्या था? हो गया ना? Okay. सबका हो गया? ठीक है? बोलो। 2013. Okay. With regard to solubility, yes, carbon tetrachloride is a covalent compound, so it is insoluble in water, whereas sodium chloride is a ionic compound which is soluble in water. Since carbon tetrachloride does not produce ions, it is a poor conductor of electricity, whereas sodium chloride on dissolving in water gives ions. Okay, and these ions are conductors of electricity. Okay, okay. Now ये अपना हो गया. अब एक ही चीज आपको टेस्ट में देने वाला हूं, और वो टेस्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 22 पे एंड 23 पे. हाँ हाँ वही ये लो 22 and 23. Fill in the blanks. Fill in the blanks आपको पूरा fill करना है पेंसिल से, and then we'll discuss out. उसमें एक एक blank का एक एक मार्क. So let us see how many marks answer you're getting. Then we'll start with the second topic, chemical bonding. ठीक है ना?
पहला टॉपिक हो जाएगा. You cannot linger on the first topic continuously, right? Gargi, second topic हम लोग को शुरू करना है, which is chemical quantity. चलो स्टार्ट करो सब लोग. Is a short surprise test. इसको क्या बोलते हैं? सोडवा. सोडवा क्या है मतलब? What is सोडवा? Surprise. Actually surprise open नहीं है, closed book. That is सटवा. ये क्या है? Surprise. Closed. Textbook. Assignment. ठीक है ना? ये अपना. अगर ओ रहेगा तो ओपन टेक्स्ट बुक असाइनमेंट. This was question 3, 23 and 22. 22, huh? This is supposed Page number 22 and 23. Fill in the blanks. Question number क्या है वो? 23. हाँ. Page number 22 पे question number 23 और उसका next page में भी question दिया है. Fill in the blanks only.
Okay. ठीक है? Let us start with one by one the answer. सबका हो गया? Boys, this side. हाँ? क्या? First, Yajat, read out the first, fill in the blanks. First question. Complete the statements. Modern periodic table arranges elements in increasing order of atomic numbers in 7 horizontal rows or periods and 18 vertical columns or table. क्या बोला आपने? Or table. Table? Dining table की study table? हाँ? Groups, my friend. तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो यजत? I'm surprised. हाँ? कौन सा ग्रुप बोल रहे हो तुम? पढ़िए. The most. The second one. हाँ. Ionization potential is a periodic property pertaining to the amount of energy required to remove an electron from the outermost shell of an isolated region. Yes. Can we read? हाँ. Third. Alkali metals are present in group 1A of the periodic table and are light metals, and zinc is a Transition element. Very good. बराबर? चलो पढ़ो. Next one. The hydroxide of the elements belonging to the period 4, group 1 and group 3 shows strong basic and amphoteric. Basic and amphoteric character. Very good. चलो next one. Property trends of elements from left to right in a period show that elements of the same period have large. पढ़ाई नहीं कर रहे हो तुम घर में? हाँ? फिर से पढ़ो. अरे फिर से पढ़ो. Property trends of elements from left to right in a period show that the elements of same period have Dissimilar properties, right? Na? Or gradation in the properties. Same number of shells. Okay? Then Same number of electron shells in which the valence electrons increases by one, yes. Or transition from metallic to non-metallic character is seen. Yes. ये लिखना पड़ेगा. Because I was not aware कि कौन सा आगे दिया है इसलिए. So this is the, come on. Next one. Krishnan. क्या नाम है आपका? Mayank ना? चलो Mayank बोलो. Property trends of element of moving down a group of a table, periodic table show that the element of the same group have same valence electron and the electron shell increase progressively by one down a group. Element in the same group have similar groups. Similar chemical properties. क्या ना? पढ़िए.
Lithium, sodium, and potassium are alkali earth metals belonging to group 1, and chlorine, fluorine, and bromine are halogens. कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप? So that's wrong. फिर से पढ़िए वही क्वेश्चन. Lithium, sodium, and potassium are हीलियम, Lithium, sir, lithium. lithium, अच्छा, lithium, sodium, and potassium are alkali metals. belonging to group 1A. 1A, yes, your first group. Fluorine and bromine are Halogens, yes. Group 17, what 7th A? 7. चलो Fluorine then. is a strong reducing agent. Fluorine. The chlorides are strong. Fluorine, एक मिनट. Chlorine या fluorine? Fluorine is a strong oxidizing agent. Non-metals oxidizing agent. चलो, no problem. एक मिनट पढ़ने दो उसको. Acidic in nature. Yes, their oxides are acidic in nature. Non-metals oxides acidic in nature. चलो पढ़ो. Next one. The trends in periodic properties across a period from left to right show that the atomic size of an element decreases, ionization potential increases, and electronegativity increases. The trends in periodic table down a group show that the atomic size of an element increases, electron affinity decreases, electronegativity decreases, and metallic character of an element increases. Yes. ठीक है ना? चलो next one. बाकी है उसमें हाँ सर एक बात एक ही बाकी तुम ही पढ़ो जो तुम वो बेंच को रिप्रेजेंट करो. Atoms with large atomic size and low ionization potential value tend to 10 to क्या? अरे तीनों में से कोई भी आंसर दे दो उसके. लूज. हाँ then बस हो गया. लूज इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है हो गया ना? काउंट करो मार्क्स काउंट करो कितना सब करेक्ट है कि नहीं. जहाँ रॉन्ग है उधर -1 कर दो. ionization potential increase होगा ना लेफ्ट टू हाँ. और फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज होगा. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट बट डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा. Electron affinity, ionization potential, and non-metallic character increases. यस लेफ्ट टू राइट सब इंक्रीज होगा. सिर्फ एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा. मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा. सिर्फ मेटालिक कैरेक्टर और एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा. सब इंक्रीज होंगे दूसरे. ओके चलो काउंट करो और मार्क्स लिखो पेंसिल से वहां पे. ठीक है एक एक ब्लैंक का 1 मार्क एंड इफ इट इज रॉन्ग इट इज 0. कैंसिल करो. काउंट किया सबको मार्क्स कितना मिला? Sir, this correct. क्या करेक्ट का मतलब क्या है? The C like the second line is correct. Zinc is a And zinc is a transition. तुमने क्या लिखा? transition. ट्रांजिशन बराबर. So, if sub-question, elements in the same group have same chemical properties. Same valence electrons and therefore similar chemical properties. Same रहेगा तो same valence electrons होगा, but similar chemical properties. ठीक है? Okay, now we are starting with the second topic over here. ठीक है ना? थोड़ा time है, हम लोग ये second topic पे line up करें. Because हाँ, because सबने marks मिला, कितना मिला आपको? 29 out of 31, 28, 30, 29. Total 31 है ना? 30. काउंट नहीं किया करो सब एक एक ब्लैंक का एक एक मार्क अगर राइट है तो 20. गुड चलो गुड ऑल ऑफ यू आई थिंक सो इन दैट 25 के ऊपर ही. नाउ लुक एट केमिकल बॉन्डिंग. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हां फुल यू गॉट वेरी गुड. एक फुल मिला. नाउ सुनो नेक्स्ट टॉपिक. तो ये फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन क्या है? व्हेनेवर यू कंप्लीट द टॉपिक गो फॉर दिस फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन. फास्ट हो जाएगा and you can test yourself see whether you are getting those fill in the blanks questions or not. इससे क्या होता है? At least you get confidence. Why?
If it is less, then you reread that topic. Okay. Now let us go for chemical bonding. नया topic है, but shortened, सबसे shortest topic है पूरे इसमें syllabus में. So we'll be able to finish within 3 lectures, maybe, I think so. Okay. Now, what is chemical bonding? It is a force of attraction which holds two atoms together in a molecule. So this particular marker is made up of what? N number of particles. Particles are mainly, for example, atoms, we can say. और atoms को bind करने के लिए जो force लग रहा है इसमें, because I have to supply energy to break it, and if I have to supply energy to break it, means there are some forces of attraction which is keeping this particular marker as one single tight piece. इसका मतलब है कि why they are holding it, there must be some cause. If they are holding it, each other atoms, that means to attain noble gas configuration. Noble gas configuration, why? Because 8 electrons means stability. Okay, so एक दूसरे को स्टेबिलिटी करने के लिए क्या कर रहे हैं वो लोग अपना 8 इलेक्ट्रॉन्स को एक्वायर कर लेते हैं. Why? Because inert gases are stable because of 8 electrons. Exception helium, which is having 2 electrons. ठीक है ना? At the same time, to have minimum energy also. Binding से क्या होगा? The energy will become less, and therefore the potential energy, once it becomes less, is more stable. Basically, a person who is actually in the state of anger will have more amount of potential energy. Okay, more amount of potential means he will be having what more, what is anger means what he is having, we can say for example instability over there. But if a person is calm and quiet, he is having less potential energy. जैसे बोलते हैं ना ठंडे दिमाग से सोचो. ठंडे दिमाग का मतलब क्या है? ठीक है कि तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाता है. ठीक है ना? अगर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रखा है, let's take an example over here. Suppose, for example, this is the top of the hill, and here you have parked your car. Tesla. Which model? यहाँ पे टेस्ला तुमने रखा है, और तुम ऐसे यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करके आ गए नीचे. But when you're looking at the car from this point, so you feel unstable. क्यों? क्योंकि अगर ब्रेक by chance was actually what? For example, ब्रेक अप्लाई किया है, but always you are having a fear. By chance अगर suppose ब्रेक भी ठीक है अप्लाई किया है, but गाड़ी इतना ऐसा एक steep flow में, या for example steep place पे है, तो ऐसा उलट के नीचे नहीं आते. या फिर बाई चांस ब्रेक अगर टूट गया, उसका जो कपलिंग है कुछ भी ब्रेक हो गया, तो क्या होगा? कार ऑटोमेटिकली नीचे आके पूरा डैश, यानी फॉर एग्जांपल अपने आप को डिस्ट्रॉय हो सकता है. दैट मींस व्हाई? बिकॉज़ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कार. अगर ये ग्राउंड लेवल है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मिनिमम होगा, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम. तो ये हाइट पे ज्यादा मैक्स, यानी फॉर एग्जांपल उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो यू विल फाइंड अनस्टेबिलिटी. तो हाउ मच अनस्टेबिलिटी कार मस्ट बी हैविंग, दैट ओनली कैन टेल. व्हाई? बिकॉज़ इसमें दिखने से आपको डर लग रहा है कि यार कार उधर ऐसा स्टीप है. अगर ऐसा भी स्टैंडिंग इन फॉर एग्जांपल एक हॉरिजॉन्टल रोड पे रहता तो ठीक था, और अगर ये वर्टिकल स्टीप इसमें है तो पोटेंशियल एनर्जी एटम का स्टेट ये है. देन आई गो अप एंड आई ब्रिंग द कार एट दिस पॉइंट, यहां पे जाके उसको पार कर देते हैं. तो इसका पोटेंशियल एनर्जी नीचे गिरा देते हैं, पूरा गिरा देते मींस उसका पोटेंशियल एनर्जी डाउन करते हैं, उसको स्टेबल करते हैं. तो एटम्स अपने आप को क्या करते हैं? स्टेबलाइज करने के लिए उसका पोटेंशियल एनर्जी कम करना है, तो इसलिए वो एक दूसरे को बाइंड करते हैं. ये एटम का एटॉमिक स्टेट है, ये मॉलिक्यूलर स्टेट है. The atoms that's why convert into molecules. ठीक है ना? When you're in the state of crisis, you look forward towards the family members, right? Like for example, तुम्हारा एग्जाम अच्छा नहीं जा रहा है, right? रोज होमवर्क तुम्हारा वो कुछ ना कुछ अपना गलती हो रहा हो, तो you're in the state of crisis. Means a person is in the state of, everybody is in that category. तो वहां पे क्या होता है? You go to your family, मम्मी हमेशा मेरे से गलत हो रहा है. Okay, what should I do? So they guide you. Potential energy वहां पे कम करने के लिए you share your problems, and the moment you share your problem, okay, problem in the sense you tell your difficulty, not a problem. It is not a problem. So immediately we look एक particular kind of solution दे देते. Immediately potential energy नीचे आ गया. हाँ तुम ऐसा पढ़ो, पहले read the textbook, then underline those keywords, then write on the homework. Start with fill in the blanks question, match the column question. पहले छोटे-छोटे questions baby step में करो, फिर बड़ा लंबा चौड़ा आंसर.
explain, give scientific reason. तो जब भी तुमको पढ़ना है तो अपने को पहले fill in the blanks question, match the column, one word answer, छोटे-छोटे questions पहले पढ़ो. उससे क्या होगा? पूरा topic का in between the lines आपको question आ जाएगी. I mean, whatever is there. So this kind of solution is given, immediately potential energy comes to this is a I think so right method for my studies. But I am working so hard, but I am not getting marks. Okay, so that means your approach of studies might be which is required is not there. तो इसीलिए तुम्हारे को ये guidance मिलेगा. तो ये guide कैसे? इधर guide है. People they say, "Hey, why did you park the car over here? It looks very much unstable." फिर तुम ऊपर जाते हो, फिर गाड़ी को नीचे. तो इससे क्या होता है? एक stability आता है. तो molecules जब form होते हैं, तो molecules are more stable. Molecules are more stable than the atoms. Because either molecules are having lower potential energy and atoms are having high potential energy. Remember? Okay, that's why atoms are unstable. Sabko malum hai, atoms cannot have independent existence. For example, if this is the mother of a child, and a small child यहाँ पे क्या हो रहा है? रो रहा है. ठीक है ना? तो जब रो रहे हैं तो क्या मदर करते हैं? Mother is able to actually what the mother does, उनका head, for example, hold करते हैं और यहाँ पे shoulder में उनको रख देते हैं. जिससे this particular broader shoulder उनका mother पे broader shoulder मिलता है, immediately वो child चुप हो जाता है. Why? It's a question of stability, potential energy इनका मिल जाता है. Yes or no? And as a result, there is a stability. अभी बच्चा चुप हो जाता है. You will say, is it magic? No, bond formation. एक बच्चे को अपना यहाँ पे एक बड़ा कंधा मिल जाता है ना, तो उसको स्टेबल, somebody is there to take care of stability, right ना? नहीं तो क्या होगा? तुम बोलेगा अरे सब बच्चों का ऐसे ही अलग से साइड में रख दो. You try to for example separate the child from mother or anybody elder to that child, it looks forward for stability. तो आपको अपना पास में बोला ये करके उसको सुनाना पड़ेगा, तब तो पाना पड़ेगा, तब जाके वो स्टेबिलिटी आएगी. वो रूल ऑफ नेचर है, मेरा रूल नहीं है. बोले नहीं सर रोने दो उसको. अब रोने दो करके क्या हो जाएगा? पूरा उसका तबीयत खराब हो सकता है. नेक्स्ट डे तुमको ही डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा. ओके, तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है. ओके, रिमेम्बर, क्योंकि कभी कभी अरे आपके पास बच्चा जाके चुप हो गया, व्हाट इज द रीजन? स्टेबिलिटी, पोटेंशियल एनर्जी उसका कम हो गया. Okay, anyway, now let's come to this one more important thing. How many types of bonds are possible over here? There are three types of bonds. One is ionic bond, second is covalent bond, and third is covalent bond, or third is coordinate covalent bond. ठीक है? Okay, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, for example, ionic bond. But before that, what is this octet theory? Lewis और Cossel का कहना क्या है? Coordinate covalent bond. ये देखो. 1916, two scientists. 1916. One was Lewis, and another was Cossel. They came out with this concept that atoms which are unstable, they would like to actually lose or gain or share electrons from their outermost shell so that they can achieve 8 electrons. Now if they lose, one atom loses, other atom gets what type of bond? Ionic bond. If one atom is sharing, other atom is also sharing, mutual sharing, it is covalent bond. If both the electrons are coming from one atom and other does not contribute anything, it's coordinate covalent. You are bringing the tiffin box every day, your friend is taking it, consuming it, and you are just giving empty tiffin box to you. You are looking at his face and smiling, not having a single grub from that tiffin box. Coordinate covalent bond, a special type of bond. यहाँ पे, So what's the difference between coordinate and the ionic bond? Here also one atom is sharing its electrons to the other. नहीं, here it's a combination of both ionic and covalent. अच्छा. Coordinate covalent bond दोनों है. Okay, hybrid type of bond बोल सकते हैं. ठीक है? Now look here. What is ionic bond? Let us understand. For that ionic bond, let us see, for example, sodium chloride का formation हम देखेंगे. Ionic bond. Here, sodium has got how many electrons in the outermost shell? Atomic number 11. It's electronic configuration 281. Yes or no?
Yes. Okay, chlorine on the other hand has got 17 protons, so it is 287. Yes or no? Now, what this sodium will do? Sodium will try to lose one electron and become what? Sodium ion. Why? Because इसके पास 281 है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा. यहाँ पे chlorine on the other hand gains one electron, become what? Cl minus. यहाँ पे 287 है और इधर 288 है. So if you see, for example, sodium has got only one electron in the outermost shell. Chlorine on the other hand has got 7 electrons in the outermost shell. Okay? Therefore, what it does, it donates one electron. And as a result, what happens? Sodium becomes sodium ion. Put a square bracket and put plus sign. And Cl minus ions are formed because of what? Taking the electron from chlorine, sorry, from sodium. And there is a force of attraction between what? Sodium and chlorine. And in the process, octet is formed in both the cases. And where one is positive ion, another is negative ion, so there is a force of attraction between positive and negative. And this force of attraction between oppositely charged ions, due to loss and gain of electrons, is called as what? Ionic bond. What are the conditions for ionic bond? One should be a metal, other should be a non-metal. One should have very few electrons, other should have many electrons. One should actually what? Have a large size, other should have a small atomic size. Okay, these conditions, if they are fulfilled with a low ionization enthalpy, high electron affinity, तो जब जाके ionic bond हो. Okay, now ionic bond और एक हो सकता है कि for example metal होने चाहिए non metal. तो अगर suppose तुम्हारे पास magnesium है, magnesium के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2. Okay, one chlorine combines with this particular magnesium. You are telling your 9th standard, I think so, right ना? Yes. वो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा. Yes or no? और क्या बनेगा? Magnesium plus 2 ion. Yes or no? Yes. Or Cl minus 2, and therefore there is a force of attraction. Right now? One should be metal, other should be non-metal. Okay? Write down this much. Then we will go further. Simple chapter है ये. ज़्यादा कुछ है नहीं. हो गया? Good. So it should be like returning to have nearest number gas configuration. Nearest noble gas configuration. Okay? To achieve nearest, ये वाला ना? Answer the To first one. have a nearest
noble gas of magnesium. Calcium oxide ionic compound. So how will you do it? Calcium oxide. Calcium के पास क्या है? Calcium has got valency of what? 2. 2882 है ना इसका? Yes. इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है. And it actually what combines with what? One oxygen atom which has got how many electrons? 6. ठीक है? It is actually what? Giving 2 electrons to this particular oxygen. You will get calcium and an oxygen is having 2,6. It will become what? Calcium plus 2 ion. An oxide will gain those 2 electrons and become what? Oxide ion. So it is nothing but calcium oxide. One metal, other non-metal. Okay? What are the properties of these ionic compounds? Let us understand that. अब इसका properties ढूंढते हैं. सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होगा? Whenever you talk, सबका हो गया है? देखो. ठीक है? Okay, now look here. Now what are the properties of these compounds, ionic compounds? सबसे पहला property क्या होगा? Whenever you have these ionic compounds in the solid state, they do not conduct electricity. Why? Because these ions are strongly binded to each other or one another. Due to that, their free ions are not available. But the moment I fuse them, what actually happens? The moment I fuse them, the attractive forces break, and this magnesium splits up in the form of what? Magnesium ion, and Cl minus ions also split up. Yes or no? So when they split up, they are actually in the form of free ions. So either in the fused state or when you dissolve in water, what these water molecules they do, they break these electrostatic forces that surround them. Yes or no? So ये water molecules हैं, surround them. And therefore what happens when you pass electricity, these magnesium ions will move towards what? Cathode. Right now? And Cl minus ions will move towards what? Anode. And there they get discharged and the respective materials are formed. So they are good conductors of electricity, but actually what? For example, dissolved in water, or maybe they are in the fused state. Right now? So what is important over here, that whenever these ionic compounds are in the solid state, they do not conduct electricity. But when they are in the fused state, you always conduct electricity. At the same time, these ionic compounds are hard, but same time brittle also. Why? Because they are actually what? Brittle in the sense, when you actually what? For example, rub them, तो अगर एक पॉजिटिव आयन दूसरे पॉजिटिव आयन के ऊपर आ गया तो रिपल्सिव फोर्सेस डेवलप एंड इमीडिएटली बॉन्ड विल ब्रेक. तो जब भी तुम रब करते हो या उसके ऊपर स्ट्रेन डालते हो, ये टूट जाते हैं. जैसे नमक का एक टुकड़ा आपको तोड़ना है, ठीक है ना, वो हार्ड है भाई, लाइक रॉक सॉल्ट डायरेक्टली अपना उसको हैमर से थ्रो ये करना पड़ेगा. जब ब्रेक जब तुम उसको मैकेनिकल स्ट्रेस दोगे या स्ट्रेन दोगे तब जाके वो ऐसा रैंडम पीस में टूटेगा. अदरवाइज रॉक सॉल्ट आप देखो है इट्स वेरी हार्ड बेसिकली. ठीक है? So likewise they are hard, at the same time they are brittle also. Okay? Why they are actually what do you say, for example, easily do not break? Okay, because they are having a strong force of attraction on all the sides. That means the forces of attraction are directionless. Directionless का मतलब क्या है? मैग्नेटिक देखो कैसे सोडियम का स्ट्रक्चर कैसे है, सोडियम क्लोराइड का पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. ठीक है? फिर इधर आएंगे तो नेगेटिव आ गया, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव. तो ऐसा करके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, एक नमक का टुकड़ा लोगे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आएगा इससे. ठीक है? तो अभी देखो ये जो नेगेटिव आयन है ये सराउंडेड बाय व्हाट? सो मेनी पॉजिटिव आयंस. तो सबको ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट होगा.
और जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और डायरेक्शन में है तो उसको नॉन डायरेक्शनल टाइप ऑफ बॉन्डिंग दो, तो इसको ब्रेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट। आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट पॉसिबल, बट इट्स गोइंग टू बी टफ, दैट मींस दे आर हार्ड एक्चुअली सॉलिड्स। ओके, दूसरा बात और एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो अगर सपोज इन लोगों का बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है तो that is called actually what lattice kind of thing, a pattern। अगर ये पैटर्न के बीच में attractive forces बहुत strong हो गए तो these salts do not get dissolved in water also, like most of the ionic salts dissolve in water, but अगर इन लोगों का जो bonding बहुत strong हो जाएगा they don't like to dissolve, so there are certain salts which do not get dissolved, like calcium phosphate अपना teeth है, अपना bones है, पानी में dissolve नहीं होती, normally they are also ionic but they don't get dissolved. Why? Because इन लोगों का जो crystal structure है इतना strong है that they do not break easily। ठीक है, so read out the important part of this topic, 2-3 minutes are there, so हम लोग सिर्फ introduction अभी पढ़ते हैं from the इसमें चलो 3 मिनट है इसमें कंप्लीट करते हैं बस, right from the introduction। A chemical bond may be defined as the force of attraction Page number 30 30। between any two atoms or molecule to maintain stability. Types of chemical bond: electrovalent or ionic bond. Yes, ionic or electrovalent, one and the same। Covalent or molecular bond and coordinate bond. Yes। Electrovalent or ionic bond. The electrovalent bond is formed by the complete transference of one or more electrons from one atom to other. Examples: sodium chloride, magnesium chloride. Conditions for the formation of an electrovalent bond. When an ionic bond is formed, the neutral atom is changed to a cation and anion. The formation of cations and anions depend on the following factors: electronegativity. If the difference in the electronegativities of two elements is higher, then the transfer of electrons will be easy. Therefore, more the difference is electronegativity, more will be the ionic nature of the resulting compound. Yes। Ionization potential. The ionization potential of a particular atom is low. It will lose electrons easily. That is, the cation is formed easily. Electron affinity. If the electron affinity value is high, an ion will be formed easily. Yes। That is, a higher electron affinity values favors ion bond. Properties of electrovalent compounds. These compounds are usually non-solids. They are usually non-volatile. Non-volatile means do not actually what convert into vapor easily। ठीक है, volatile नहीं है, है ना, liquid form में रहेंगे तो do not escape into gas or vapor easily। Then because strong bonding is there, then high boiling point and high melting point. yes, they are having very high melting point, boiling point। Why? Electrostatic forces are very strong if they are present in all the directions। ठीक है ना, so then They do not conduct electricity in this solid state। Yes। They are good conductors of electricity in their molten states or in aqueous, yeah, there is water। solutions. Yes। They react faster in aqueous solutions. Yes, because they are in the form of free ions। ठीक है ना, okay, pack up। नेक्स्ट टाइम हम लोग आगे पढ़ेंगे। राजस्थान बहुत ही हो गया।
रहा है क्या?